Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We'll start with technical and derivatives outlook. So the last Friday there was a bullish. There was a good amount of breakout in the Nifty. Nifty was up by close to 1.5% with a gains of 272 points. So finally, at the end of the week, there was a momentum where the Nifty almost rallied to 17,600 level. So that's a positive thing. We were looking for the bounce back trade, and this we believe the continuation of this bounce back should be seen till 17,800, 18,000 level. So once the index, if this bounce back rallies till 17,800 and 18,000, and we have a weekly close above 18,000 level, then we'll further review the further directional trend. But right now, we believe this continuation of the trend will be there till 17,800, 18,000 level. So same with the Bank Nifty. Bank Nifty the was up by 800 points. In percentage term, it was up by 2.13%, and it closed at 41,251 level. So looking at the chart, what we can see, 42,000 was the level from the Bank Nifty has seen a breakdown in the previously when the breakdown came in the Bank Nifty. So this momentum will go till 42,000. We need a weekly close above 42,000 a strong close above 42,000 for the further directional trend. So so that's all. So that is what I think. So Nifty should be heading for 17,800 and Bank Nifty for 42,000. The supports for the Nifty is 17,300, which is the 200-day moving average. So that should be the lower side support. If by any chance, if the bounce back gets stuck at 17,800, and so the lower side support will be 17,300. So that should be the range for the this coming week. Support for the Bank Nifty is at 40,000 level. So 40,000 lower side and 42,000 the higher side. So these are the both side trading range for the indices. Coming to the sector specific, PSU banks was the one which saw a very good bounce back. We were talking of the SBI for the last couple of days. So even the SBI was one counter which has seen a very strong bounce. So we maintain that SBI, Canara Bank, and Bank of Baroda are the counters which are looking very strong on charts. After that, I think there would be some bounce which will be seen in the metals. So maybe for the week, we can keep a watch on the metal space, and then the Bank Nifty. Bank Nifty is very strong. So right now, I will go with the technical levels. There would be some resistance 42,000. Above 42,000, it will be further strong. Coming to the derivatives data, so Nifty futures have witnessed a short covering in the Friday session to the tune of 5.53%. The put call ratio also gained from 0.76 to 1.17. So that's a positive side. The major addition in the call option was seen as 18,000 and 17,900. So that will be the resistance. Lower side 17,500 and 17,400 put option. So that will be the support. In case of Bank Nifty has added a fresh long positions to the tune of 5.34%, which is a addition of 49 lakh shares. The put call ratio also gained from 0.79 to 1.28 ratio, which is also a sign of strength. The major additions were seen in the call options seen at 41,500. So that will be the resistance, and 41,000 put option. So that will be the support. So after this, one last thing, this FIS index data. So all this while they were shorting the index data, for the very first time, they added a long position close to 42,277 contracts in Friday's session. So now their net position from 1,30,000 has come to 88,000. So this is also good. And this long short ratio from 15, it is now improved to 23%. So the FIL data, we believe, will turn positive when we see this their net short position, which is at 88,000. When it comes to 40,000, yeah, maybe below 40,000. So that will be a sign of strength from the FI point of view also. So net the bias is positive for the week. We are looking for the continuation of the bounce back trade. So that's the view for the week. Thank you, and I'll hand over the call to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. To start up with, the first we have initiated coverage on Greenply Industries with the buy rating and the target price of 171, which is roughly like 25% upside from current price point. If you look at from business point of view, Greenply is a proxy play on rising real estate sales in India and is the second largest plywood company in India. It's on the verge of commissioning
roughly 240 or 1000 CBM medium density, that is MDF plant. And we expect the plant to gradually ramp up production during FY24. Now, company has completed its major capex cycle, and going ahead, we expect the free cash flow will remain strong, and net debt, that is the leverage of this company will fall. Valuation wise, it is trading at 10 times, and it is quite inexpensive vis-a-vis the Century Ply, which is trading at 20x. So our buy rating of 171 with the target price of 171 with upside of around 25 odd percent. Next, on cement side, we are positive on overall. The volume growth has been pretty strong, and sector wise, if you look at, the volume growth has been pretty strong, and then there has been weakness in the energy cost, so that bodes well. Cement price hike is the only element that is to be watched. South region has taken a price hike, and we expect this to this to be followed up in central and north and other part of the region. Now, with this as a background, we understand Birla Corp and the stock has been weak from quite some time. We expect the stock could see again an upside of 20 to 25 odd percent. If you look at trajectory wise, Birla Corp has around 20 million ton of capacity, and it is in the category of mid caps. And region wise, it has exposure in central region, that's a main market, and then they have a couple of plant in north also. All in all, I think we see given the way the energy tailwinds are there, which is an improvement in the profitability, this will be seen in Birla Corp. We are expecting anywhere between 100 and 200 rupees per ton improvement in the profitability, that is a EBITDA per ton in the Q4, that is this particular year. So this is on cement. Next is on PVR. So PVR has opened a 5-screen multiplex in Nalasopara, which has a capacity of around 1070. Now, with this opening, PVR has achieved its target of opening 100 to 110 screens in FY23. The total screen addition during FY23 now stands at 101 now. And the screen count of a combined entity, which is PVR Inox, is roughly stands out 1,663. This bodes well for the company with respect to its future earnings. And I think if you look at vis-a-vis the guidance, company is achieving its guidance, so that is further giving comfort in terms of what exactly the management is doing on the street. And we reiterate our positive view and a buy rating on the stock with the target price of 2010. Next is on HCL. So company has announced that it expects to double its semiconductor services business in the next 3 to 4 odd years, as its group company is setting up electronic chip plants. Company stated that it sees semiconductor services a big opportunity based on the current demand environment, which gives us the confidence of doubling the semiconductor services in the next 3 to 4 odd years. HCL technology currently partner with the semiconductor players like Intel to offer its services, and post the opening up of semiconductor plant, HCL Tech will be able to provide end-to-end services, and HCL being a partner in it. This bodes well for HCL. And next is on Maruti Suzuki. So company expects semiconductor shortages to be continue for the next few odd quarters, leading to further increase in the order backlog of certain models. Company pending order book has stretched to around 3.55 lakhs unit. Now, due to chip shortages, Maruti Suzuki has already witnessed a production loss of close to around 46,000 odd units in Q3, and it is expecting some kind of impact on the production in the ongoing, which is in the Q4. Now, it is difficult to predict the exact timeline when it will come to normalize, but overall, I think if you look at PV segment is expected to post a growth rate of around 5 to 7 odd percent in FY23, and as and when these semiconductor issues, chip shortages start receding, so that bodes well for the PV segment and could improve the volume, overall the growth trajectory for the Maruti Suzuki as a stock and for the industry as a whole. We understand in this current environment, Maruti Suzuki being a large cap, and then it offers the best bet, and that's our view on Maruti. Next and last thing from my side is on Tech Mahindra. So we attended an analyst meet of Tech Mahindra, where we currently have a hold rating on the stock with an upside of roughly around 11%. And the key highlight was that company expects growth to be driven by account expansion and product platform. And if you look at that is coupled with the recent, the stock has recently, which including Tech Mahindra, has done pretty well.
and we are reiterating our hold rating on the stock, and target price is 1200 rupees, which is like 15 times. And our company is aiming to double its PNP revenue, which is like, from US dollar 450 odd million to US dollar 1 billion in the next 2 to 3 odd years, and continue to win large deal wins. And if you look at the only trigger, like, probably which needs to be watched is the change in the management. And that is the only thing to be watched in terms of the stock performance from here on. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it to the team now. Over to you. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll see more further of this. Starting with these TV shareholders rejected the appointment of 4 candidates as the non-executive independent directors on the company's board. So they have reduced the strength to 9 directors, and they got a voting of only 25% of the shareholders that voted in their favor, and 74% of the people voted against them in the board under the similar. Secondly, Bajaj Electricals has been awarded the contract of supply of goods and services from by SBDCL, a domestic entity, and the RDXS scheme of 565 crore. Orchid Pharma is also entered into an MOU with an overseas technology provider for licensing 7-ACA technology. MGL will acquire 100% shareholding in Unison Environment through purchase of shares from its existing shareholder. This will take place upon the receipt of 100% transfer of shares from petroleum and natural gas utility. Power Grid has also been declared as a successful bidder under a tariff competitive bidding to establish an interstate transfer system for 2 projects built on operate transfer basis. Concerned Rulek has also acquired 40% stake in Nerofix from Polygel. Consequent to the said acquisition, Nerofix will also become a wholly owned subsidiary of Concerned Rulek. Zydus has received a final approval from the US FDA for its Vigabatrin oral USP. Vigabatrin for oral is indicated for the treatment of refractory complex partial seizures as adjunctive therapy in the patients for the 2 years age and older. HDFC has also informed the exchange that the NCLT has approved the proposed merger of the two company units, that is HDFC Property Venture, that is HPVL, and HDFC Venture, that is HCCL, into HDFC Capital Advisor. Reliance for the Reliance US-based First Solar and Shady Sai has bid for the end-to-end polysilicon wafer cells module, that is PWCM, manufacturing for a total of 15.4 megawatt under the second tranche of the PLI scheme for the solar equipment manufacturing. IEX also, the volume numbers came for the February month 8,200, and so the real-time market volume rose to 10% year-on-year to 714 MB. With Info, the company's arm Red Star Labs also invest about 5.2 crore in the SP Loot. SP Loot is engaged in the business of providing products and services to pet parents to respect pet health and behavior and nutrition through content-based health. Lindy India has also invested a sum of 7.65 crores in FPEL Surya Private Limited towards obtaining 26% stake. The objective of stake the acquisition of the purchase of renewable power under the capital mechanism, which will result in lower tariff and consequent cost savings for the company. HCL has received an income tax refund from the IPO, that is for assessment to 1213, and this is to the ITAT Bangalore, which allows R&D expenditure of 726 crores as a capital expenditure, resulting in the refund of 570 crores, which includes a refund of 163 crores, which will be positive for HCL. PNC Infra has also received a provision certificate from the NHAI, that is implemented in subsidiary PHC Triveni Singham Highways. From independent engineer, the appointed date for the project was January 2019 with 9 days scheduled construction period and 15 years of operation post completion. ITC has also incorporated a newly owned subsidiary, that is ITC Fiber Innovation, and Master in the Innovation Software Limited would be 1 lakh. Adani Ports, after revising the outlook on the Adani Gas, ICRA has downgraded the outlook on the Adani Group platform, that would be Adani Ports. ICRA has changed the outlook from stable to negative, by reaffirming the ratings on the long-term fund-based and non-fund-based loans and NCDs and commercial paper. The similar action was also group joint venture Adani Total Gas as well. The reason behind this negative outlook is seen that the deterioration of the group's financial flexibility. Last update from mine would be CEMS has picked up the majority stake in Think Analytics India, Think 360. This is streaming the account aggregation framework and enhancing the AI and analytics services. The company said on Sunday. Think 360 is established in 2013 in an AI and data science firm. It provides innovative solutions to the digital technology like advanced analytics, machine learning, mobile and cloud computing. 360 AI also offers software as a service-based products and data science and technology advices to the market leading from the Indian across. That's it from mine. I'll hand over to Shreya for Hindi updates. Thank you, and over to you.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। जो फर्स्ट अपडेट है कि हम लोगों ने मतलब फंडामेंटल टीम ने ग्रीन प्लाई जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इनिशिएटिंग कवरेज किया, रिपोर्ट किया है। तो करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है वो 171 है। ग्रीन प्लाई एक प्रॉक्सी प्ले राइजिंग रियल एस्टेट सेल्स है इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट प्लाईवुड कंपनी है। उनका जो वर्ज ऑफ कमीशन है 2,40,000 के अराउंड सीबीपी मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड प्लांट है वडोदरा गुजरात में। उनका हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो प्लांट है वो ग्रेजुअली रैंप अप होगा प्रोडक्शन केस में ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में। ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखे तो ये 10x के पी पे चल रहा है, तो ये अनएक्सपेंसिव है हमारे व्यू से। और सेंचुरी प्लाईवुड है जो ट्रेड करता है 20x पे। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है। नेक्स्ट अपडेट है पीवीआर के ऊपर। कंपनी है उन्होंने 5 स्क्रीन ओपन की है मल्टीप्लेक्स नाला सुपारा में। उसकी जो कैपेसिटी वो 1070 सीट्स की है। और इसके बाद कंपनी का जो टारगेट था 100 एंड 110 स्क्रीन फाइनेंशियल ईयर 23 में, उसके अराउंड वो पहुंच गए, क्योंकि उनका जो टोटल स्क्रीन एडिशन हुआ है फाइनेंशियल 23 में अभी तक का वो 101 है। और ये काउंट जो है वो कंबाइंड एंटिटी का है, पीवीआर और आइनॉक्स का अभी स्टैंड हो रहा है 1663 है। ये अच्छा है कंपनी के लिए फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से। करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 2010 है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। देन एचसीएल जो है कंपनी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका जो सेमीकंडक्टर सर्विस बिजनेस है वो डबल होगा नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में। उनकी जो ग्रुप कंपनी है वो सेटअप कर रही है इलेक्ट्रॉनिक चिप प्लांट्स। कंपनी ने बोला है कि वो सेमीकंडक्टर सर्विसेज है वो बिग अपॉर्चुनिटी है जो करंट डिमांड है एनवायरमेंट के उसके अनुसार। और जो कॉन्फिडेंस देती है कि उनका जो डबलिंग मतलब सेमीकंडक्टर जो डबल होने वाला है सर्विसेज रेवेन्यू वो 3 to 4 इयर्स में। एचसीएल जो टेक्नोलॉजी है करंटली पार्टनर है सेमीकंडक्टर प्लेयर्स के साथ लाइक इंटेल के साथ, जो ऑफर करती है उनके सर्विसेज। एंड ये पोस्ट ओपनिंग के बाद सेमीकंडक्टर प्लांट्स एचसीएल टेक मतलब प्रोवाइड करेंगी एंड टू एंड सर्विसेज, और ये कॉर्पोरेट के साथ पार्टनर करेंगी। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपडेट है मारुति सुजुकी के ऊपर। मारुति सुजुकी एक्सपेक्ट करती है उनका जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि ये लीडिंग और जो इंक्रीज उनका जो ऑर्डर बैकलॉग है वो सर्टेन मॉडल्स में हो रहा है। और कंपनी की जो पेंडिंग बुकिंग है अभी वो स्ट्रेच हुई है चिप शॉर्टेज के कारण 3.55 लाख यूनिट्स। ये चिप शॉर्टेज के कारण मारुति सुजुकी ऑलरेडी विटनेस किया है प्रोडक्शन लॉस अराउंड 46,000 यूनिट्स Q3 में। और उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन ऑनगोइंग क्वार्टर में भी हो सकता है। कंपनी ने बोला कि इट्स डिफिकल्ट है कि प्रेडिक्ट करना कि ये मतलब टाइमलाइन देना कि ये जो शॉर्टेज का इशू है वो कब तक सेटल डाउन होगा। और क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है इसके कारण। पीवी सेगमेंट एक्सपेक्टेड है पोस्ट ग्रोथ 5 to 7% फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है मारुति के लिए। उसके बाद टेक महिंद्रा की एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके ऊपर अपडेट है। तो की हाईलाइट्स ये है कि कंपनी के जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ड्रिवन जो है अकाउंट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स, लार्ज डील्स एक्सपेंशन, न्यू ग्रोथ एरियाज में। कंपनी एक्सपेक्ट करे कि उनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लोअर सबकॉन्शियस है उसके कारण और लोअर ट्रांजिशन कॉस्ट है उसके कारण, और उनको लार्ज डील्स भी मिली है। एसएनजीए भी इम्प्रूव हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ लोअर मार्जिन एक्विजिशन पे हो रहा है। नियर टर्म में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो ग्रोथ है वो मॉडरेट रहेगा, क्योंकि उनके पास चैलेंजेस है टॉप टेलीकॉम क्लाइंट के, माइक्रो के अनसर्टनिटी है, सीजनलिटी है उसके कारण। और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इम्प्रूव मार्जिन होगा 16.6 से 16.9 फाइनेंशियल ईयर 24 में एस्टिमेटेड है और फाइनेंशियल ईयर 25 एस्टिमेटेड है। बट रिसेंटली हमारा स्टॉक के ऊपर होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 1200 है। कंपनी ने इसके अलावा एम किया है कि उनका जो डबल करेंगे पीएनपी रेवेन्यू है वो $450 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में। और उनके जो कंटिन्यू है लार्ज डील्स उनके पास आ रही है, तो नियर टर्म में टॉप क्लाइंट्स इश्यूज और माइक्रो अनसर्टेनिटी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है सीमेंट जो प्राइसेस है साउथ रीजन में ऑलरेडी उसके ऊपर प्राइस हाइक हुई है। इसी का देख के सेंट्रल और नॉर्थ में भी प्राइस हाइक होगी।
तो इसका जो फायदा है वो बिरला क्रॉप कंपनी को होगा। स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म हमारा पॉजिटिव व्यू है और यहाँ से अपसाइड 20 to 25% का है, क्योंकि जो बिरला क्रॉप एक मिड कैप सेगमेंट में आता है और जो 20 मिलियन कैपेसिटी उसकी हो सकती है, और उसका एक्सपोजर जो है कंपनी का वो सेंट्रल और नॉर्थ में है। सेंट्रल में ज्यादा है, उसके बाद नॉर्थ में है, और उनका जो क्वार्टर फोर भी प्रॉफिटेबिलिटी में होगा, तो ये स्टॉक को आप एक बार वॉच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है डिश टीवी के ऊपर। जो शेयर होल्डर थे डिश टीवी इंडिया के, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट है 4 कैंडिडेट्स नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो रिजेक्ट की है। बजाज इलेक्ट्रिक कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज SBPDCL से मिला है, और ये बेसिकली डोमेस्टिक एनडीबी है अंडर RDSS स्कीम के, और उसकी जो वर्थ है वो 565 करोड़ की है। ऑर्किड फार्मा कंपनी है, वो एंटर कर रही है MOU विद ओवरसीज टेक्नोलॉजी के साथ, जो प्रोवाइड करेंगी इन लाइसेंसिंग 7ACA टेक्नोलॉजी। देन महानगर गैस है, वो 100% अक्वायर कर रही है शेयर होल्डिंग यूनिसॉन एनवायरमेंट, जो परचेस ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ होगा, जो रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल 100% ट्रांसफर शेयर्स होंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। देन पावर ग्रिड कंपनी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो सक्सेसफुल बिडर है टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंडर एस्टैब्लिशमेंट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के 2 प्रोजेक्ट के लिए, और उसका जो ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मूड बेसिस पे होगा। देन कांसा नेरल के, उन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन 40% स्टेक नेरोफिक्स फ्रॉम पोलीगेल का, जो कॉन्जिक्यूटिव एक्विजिशन शेयर्स है नेरोफिक्स के, जो होली ओन सब्सिडरी कांसा नेरल पेन के हो जाएंगे। देन जायडस लाइफ साइंस है, उनको फाइनल अप्रूवल मिला है US FDA से, जो विगाबेट्रेन जो ओरल सॉल्यूशन USP है, ये जो ये है वो ओरल सॉल्यूशन इंडिकेट ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी कॉम्प्लेक्स पार्शियल एडजेक्टिव थेरेपी है, जो पेशेंट 2 years से लेके ओल्डर है उनके ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट अपडेट है HDFC ने इन्फॉर्म किया है कि एक्सटेंशन NCLT से अप्रूवल आया है, जो मर्जर ऑफ 2 कंपनी था, HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड एंड HDFC वेंचर कैपिटल, जो अभी HDFC कैपिटल एडवाइजर में होगा। देन रिलायंस इंडस्ट्री है, US बेस्ड फर्स्ट सोलर श्री साई, उन्होंने की जो बीड है एंड टू एंड पोली सिलिकॉन की वॉफर सेल्स मॉड्यूल्स की, जो टोटल 15.4 गीगावाट मैन्युफैक्चर करेंगे। सेकंड रैंक के प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है उसके स्कीम के अंडर जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है IEX के जो डेटा आया था, तो टोटल वॉल्यूम से फरवरी का वो 8200 MU है। रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम राइज हुआ है 10% से ईयर ऑन ईयर 1714 MU। इन्फोएज कंपनी है, वो अभी रेड स्टार्ट लैब है, उसमें इन्वेस्ट करिए 5.2 करोड़ इन फ्लूट में, जो ये कंपनी एंगेज करेंगी बिजनेस प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड पेट पेरेंट्स, जो रिस्पेक्ट करेंगे पेट्स की हेल्थ बिहेवियर और न्यूट्रिशन कंटेंट ऐप बेस्ड से हेल्प होगी ये। लिंडे इंडिया जो कंपनी है, वो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 7.69 करोड़ FPEL सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, जो सब्सक्रिप्शन होगा 26% स्टेक का, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्टेक एक्विजिशन का, वो परचेस मतलब मोस्टली वो परचेस कर रहे हैं रिन्यूएबल पावर अंडर कैपेसिटिव मैकेनिज्म के, और ये उनका रिजल्ट होगा इसमें लोअर टैरिफ और कॉन्जिक्यूटिव कॉस्ट सेविंग होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी है, उनको इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स से ऑर्डर मिला है ऑफिस ऑफ जॉइंट कमिश्नर IT एंड इन्वेस्टमेंट ईयर 2012 से लेकर 2030 का, जो परस्यू डायरेक्शन बैंगलोर, और ये अलाव करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसके जो 725.98 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रिफंड 570.05 करोड़ का कुछ है रिजल्ट, और रिफंड इंक्लूड्स करता है इंटरेस्ट 163.68 करोड़ का। PNC इंफ्राटेक कंपनी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो इम्प्लीमेंट करेगा सब्सिडरी PNC त्रिवेणी संगम हाईवे, जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर से होगा। दो अपॉइंटेड डेट है प्रोजेक्ट की जनवरी 12, 2019, जो 910 डेज सबड्यू है कंस्ट्रक्शन के लिए, और 15 years ऑपरेशन पीरियड के लिए पोस्ट कंप्लीशन। देन ITC है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है न्यू होली ओन सब्सिडियरी नेम ऑफ ITC फाइबर इनोवेशन लिमिटेड 3 मार्च से, और इनिशियल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, कंपनी ने बोला है कि वो अराउंड 1 लाख के अराउंड होगी।
देन अदानी पोर्ट कंपनी है, उनका उन्होंने इकरा ने उनका डाउनग्रेड किया आउटलुक अदानी ग्रुप बैक फॉर्म, और ये टाइम मतलब ये अदानी पोर्ट्स के लिए होगा। रिवाइज आउटलुक है अदानी पोर्ट आर्म का नेगेटिव से स्टेबल। और लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड लोन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर का भी ये सेम एक्शन उन्होंने जो ग्रुप जॉइंट वेंचर है अदानी टोटल गैस, इसके साथ भी किया है, क्योंकि रीजन बिहाइंड था दोनों में निगेटिव आउटलुक सेम है डिटोरेशन ग्रुप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कैम्स जो कंपनी है, उन्होंने मेजरली स्टेक्स थिंक एनालिटिक्स इंडिया में पिकअप किया है। जो बेसिकली उनका एम है कि वो स्ट्रेंथन करेंगी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और इनहांस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिकल सर्विसेज। देन मार्केट के ऊपर अपडेट है कि मार्केट में हम लोग अभी पुल बैक का ये वीक में एक्शन देख सकते हैं। निफ्टी में 17,800 का पुल बैक आ सकता है और बैंक निफ्टी में 42,000 का पुल बैक आ सकता है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.